शुक्र अल्लाह का सर, ठीक ठाक। आप सुनाएं, आपका क्या हाल है? Alhamdulillah, Alhamdulillah. So, how is everything about the COVID? Hello, I am audible. जी जी सर, आ रही है बस। Okay, Sahi. So, I think so. Someone is saying to share. Wait a bit. सर जी जी पेपर नहीं चेक किए अभी तक? पेपर इंशाल्लाह कल आप सबको बताऊंगा। कल चेक कर लिए? चेक कर लूंगा कल तक। कुछ रहते हैं। डोंट वरी फॉर द पेपर। सर बस अच्छे मूड के साथ चेक कीजिएगा। मूड अच्छा है। आपको कितने मार्क्स चाहिए? सर मैक्सिमम जितने हो सके। सर आप पूरे दे दें बेशक। एक तो आप लोग इतने लालच करते हो, अल्लाह के बंदो थोड़ा कम बताया करो ताकि दिल को लगे तो सही। अच्छा सर 25-26 ही दे दें। सर ये मैंने तो कहा किसने मैक्सिमम जितना आपका दिल करे। मैक्सिमम कहा ना? मेरा तो दिल करता है 30 के 30 दे दूं। इससे अच्छी बात ही क्या है सर। डोंट वरी फॉर द पेपर। इंशाल्लाह आप सबके मार्क्स अच्छे होंगे, लेकिन ये है कि आप लोग एक एक, आज मैं आप लोग को एक एक, बल्कि अब अगर आप खुद कोई प्रोजेक्ट सेलेक्ट करना चाहते हैं, क्योंकि आप लोग के जो इंटरनल मार्क्स हैं वो भी 30 है। और एक अनफॉर्चुनेट ये कि लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को कहा था कि समरी सबमिट कर दो। वो जो मैंने कुछ वीडियोस भेजी थी, किसी ने भी सबमिट नहीं की। वो पेपर का ऐसा शौक लगा था, बिल्कुल जहन से निकल गया। आपका जो दूसरा सेक्शन है उसमें से सिर्फ एक बंदी ने नहीं की, तो यहाँ भी थोड़ा सा अब लेवल ऑफ कमिटमेंट होता है। उन्होंने, मैं आपके लोगों के साथ शेयर करूंगा। बहरहाल आप अपना असाइनमेंट मीट किया करें एटलीस्ट। ठीक है। अच्छा, अब जो है कितने लोग ऑनलाइन है? अली, Ali is not listening me. Ali is there? Hello. सर आई थिंक अली नहीं है अभी। अच्छा अच्छा, आप लोग ये करें कि आप अपना अपना एक टॉपिक सेलेक्ट कर लें, ठीक है? उस पे आप लोगों ने वो उसके 15 मार्क्स हैं, ठीक है? वो आप लोगों ने उस पे प्रपोजल बनाना है और उसकी प्रेजेंटेशन भी देनी होगी। सर ये इंडिविजुअल होगा या ग्रुप में? इंडिविजुअल होगा, ठीक है? जी ठीक है सर, श्योर। तो जो जो टॉपिक आप सेलेक्ट करना चाहते हैं, यू कैन अली है नहीं, वरना वो लिस्ट बना देगा। अदरवाइज जिसको टॉपिक की सिलेक्शन नहीं आती तो मैं आप लोग के साथ टॉपिक शेयर कर दूंगा बहुत ज्यादा, उसमें से आप लोग कोई टॉपिक ले लें। सही है? जी सर ये बेस्ट है। ठीक है। अच्छा, फॉर टुडे व्हाट वी विल डू, फॉर टुडे वी हैव टू स्टडी सम थ्योरीज दैट इज डायरेक्टली लिंक विद द इंटरनेशनल फाइनेंशियल एनवायरनमेंट। सही है? Like all the businesses, all the stock exchange, all the dividend remittances and financing, all the investment and financing, all the exporting and importing, every product market, every subsidiary and every international financial market
all the environment are catered through these theories. Means ke up till date what we studied different type of theories, like they are directly linked with the local businesses as well, or with the general businesses as well. So today we will have some discussion about the international environment, that what type of theory you will use in order to make different type of relationship which will be very much beneficial for the maximization of the profit. So in this regard, like you all know about the term that is called MNC, multinational corporation. So what basically multinational corporation do or does, they do work in international environment, irrespective of their home, irrespective of their parent company. They are also working in the other countries as a subsidiary. So what type of theories, what type of different type of the relationship that should be built in order to get the maximization of the profit? Because the ultimate goal of any organization, either it is domestic or it is international, either it is in the product market or it is in the subsidiary market or it is in the financial market, anywhere the company is doing anything, that is basically for what? For the profit maximization. So आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली है अबाउट द फाइनेंशियल इन्वायरमेंट. व्हाट टाइप ऑफ फाइनेंशियल इन्वायरमेंट? द इंटरनेशनल फाइनेंशियल इन्वायरमेंट. On what perspective you will see it? You will see it in a multinational perspective. And what multinational companies are doing? They are doing businesses in the foreign exchange. So in a nutshell, what basically this means, that you are basically involving your business is an export and import. So the fact remains over here that if you are doing export or import, if you are doing financing in the other market, or if you are doing investments in the other market, you need some theories, because you cannot play a blind game. So all these theories are developed in order to guide you for the investment, for the financing, and for the doing business either in export or import. So we will discuss this international environment, and this international environment will be discussed on the base of the multinational company. ठीक है, लाइक पाकिस्तान में मल्टीनेशनल कंपनी आपकी नेस्ले है, आईसीआई है, आपके केएफसी है, आपके क्या कहते हैं मैकडी है, एंड बहुत से ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है who are doing businesses in the other country, although their parent company is in other country. Okay, so going to discuss this further, what will be the objective of today's lecture, that what is the main goal of a theory, means how theory is supporting the main goal of the multinational corporation. Either the theory is contributing or not, or what is the exact relationship of the theory with the organization in order to excel in the multinational environment. This will be like an objective of the subject today. Beside this, we have to study different type of theories that will justify the international business, like the theory for the justification of the international businesses will be used, how they will used, why they will used, when they will use, and what type of benefit they will get it. And beside this,
by using these theory, what type of help you can get from it in different common method of international businesses. So our topic for today is the international environment of the finance, the different type of the multinational corporation, either that is financial corporation or non-financial corporation working abroad in a other country, what type of theory they have to use. So in simple word, I'm audible to everyone? Yes, sir. Okay. Yes, Okay, thank you. In simple word, uh, uh, the common goal of any multinational firm or any firm is the maximization of the shareholder wealth. So the focus will be on the shareholder wealth. So how the shareholder wealth can be maximized? There are different type of theories that will help in the maximization of the shareholder wealth, because these theory will have a significant contribution to the shareholder wealth. Okay. In this regard, सबसे पहले वी स्टडीड, हमने जो पढ़ी थी क्या कहते हैं, वी स्टडीड इन एजेंसी थ्योरी. ओके, यानी जो इंटरनेशनल इन्वायरमेंट के लिए चाहिए, आपको पहली थ्योरी चाहिए दैट हैज ऑलरेडी बीन डिस्कस्ड अ लॉट. सो this theory can also be used in an international environment. And how you will use this theory? In this theory will be used for the agency problem. And agency problem क्या है? There are three type of problem. अगर आप लिखना चाहते हो, three type of problem. There is type 1 problem, there is type 2 problem, there is type 3 problem. The type 1 problem is between principal and principal. The type 2 problem is between principal and agent. Sorry, the type 1 is in between principal and agent. The type 2 is between principal and principal, and type 3 is between agent and agent. So these are the problem, and these problem arise because of some reasons. ठीक है, लिख रहे हो आप सब? हेलो? यस सर. क्योंकि जी, मैंने जी. अभी रिसेंटली एमफिल के लड़कों का, एमफिल की क्लास का मैंने वाइवा लिया 12 मार्क्स के लिए. उनका जो रिस्पांस था दैट वाज नॉट टू गुड, और वो सारी चीजें मैंने इस तरह पढ़ाई भी थी, लिखवाई भी थी. तो मुझे ये डर है कि आप लोगों का जो वाइवा होगा, क्योंकि आपका फाइनल एग्जाम का 40% वाइवा भी होगा, तो काइंडली इन चीजों, मैंने उनसे टाइप 1 थ्योरी पूछी है, किसी को नहीं आई. ठीक है, तो जो चीजें मैं लिखवाता हूं वो आप एटलीस्ट अपने वाइवा के लिए रेडी किया करें. सही है? So ठीक है सर. so the problem is agency problem, and because of what? Because of the three types of the cost. First one is in between the principal and agent, then principal and principal, then principal and then agent and agent. So why this? This is the question, why this problem arise? ठीक है, ये क्यों आता है? The first one is basically because of the culture of foreign manager. ठीक है, first one is culture of the foreign manager. Second one is because of the size of the organization. ठीक है, third one is because of the distance from the parent company.
So what basically these means ke we are discussing about the international finance, then we are discussing about the businesses, and then we are specified with what, with the subsidiary, and these subsidiary are basically what, are basically iski parent company is somewhere else. So we are discussing about the agency problem, or agency problem kya hai कि agency problem will be minimized. Why? Because this will have a negative impact on the shareholder wealth. तो ये आता क्यों है? इसकी वजह ये है कि कल्चर की वजह से, फॉर एग्जांपल इफ अ कंपनी इज इन यूएस and their subsidiary is in Afghanistan or Pakistan or Sri Lanka or India, so obviously the culture of US is different than the culture of Pakistan. The manager with a different mentality will have to deal with the manager of Pakistani culture. So sometime because of the culture, the agency cost, the agency problem can arise. That is why you have, wherever you will go, you have to study the culture of the concerned company. Beside the culture, there is a language barrier as well. There is a communication barrier as well. There is a punctuality barrier as well. There is a border barrier as well, and so on. So इंटरनेशनल बिजनेस में एजेंसी इशू है. एजेंसी इशू 3 टाइप का हो सकता है, प्रिंसिपल और एजेंट, प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल, एजेंट टू एजेंट. And how you will solve, why it arise? Because of the culture of the foreign manager, because of the size of a multinational company. Size of multinational company ये है कि when you have a lot of subsidiaries in the world, then it is difficult to have an access or to have an observation of all these subsidiaries in a tight way. That is why sometimes the size of the multinational company is very big. So because of the size, this problem can arise as well. ठीक है? So उसके बाद there is a like we discussed about the agency theory. Now we will discuss about the management control theory. Okay. I'm audible to everyone? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So the Yes, second sir. theory, thank you. The second theory is management control theory. Okay. Management control theory. So in simple word, by management we means planning, organizing, leading and controlling. Okay. So the word controlling, okay, controlling basically means to look back. To look back what you have planned, what you have organized, and what are you leading, are working in a positive way or a negative way. Okay? Means management have to plan, management have to organize, management have to control, management have to maintain, and so many things. But these are the general definition. In a specific way, you can write it that management control theory can be divided into two. One is centralized theory, centralized management, and the other one is decentralized management. Okay? One is called centralized management and the other one is decentralized. सही आपने दोनों किस चीज के लिए बताई हैं? Management control theory. सही है सर. ठीक है? मैनेजमेंट कंट्रोल थ्योरी, सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट कंट्रोल थ्योरी और डिसेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट कंट्रोल थ्योरी. अब
डिसेंट्रलाइज क्या है कि डिसेंट्रलाइज्ड इज बेसिकली यू आर गिविंग पावर टू द पर्सन ऑफ द कंसर्न कंट्री मैनेजर, यानी you have shifted the accountability, responsibility and authority. Means if you are going for a decentralized concept, what you have to do, you have shifted the accountability, authority and responsibility to the concerned country head or managers. However, in contract, what will centralized mean that you are keeping all the power with yourself in the parent company. So it means that in centralized, if your company is in US, what will be happen? You are controlling everything from the US company, from the US parent company of the different problems of Afghanistan. So this is a centralized, and in centralized what happens, that there is a less type of burnout because all the decisions comes from the parent company. However, in decentralization, the power shifted to the concerned country subsidiary, where you can have a lot of agency issues. क्योंकि अगर पाकिस्तानी मैनेजर को आप सारी अथॉरिटी दे दें तो यहाँ लाइकिंग, डिसलाइकिंग, बाइसनेस, hypocrisy, a lot of other things जो कि पर्सनल बेस पे they can be developed, क्योंकि the power is in the hand as a decentralized manager. That is why a lot of issues in the shape of agency cost can be happen. However, the management control theory says that if the power, responsibility and authority are left as a centralized management, then the agency cost can be reduced more effectively than in a decentralized styles of the control theory. Clear है? Sir. Yes, sir. Okay. So what we discuss, we are discussing about the MNCs, we are discussing about the international finance and business, we are discussing about the international markets, we are discussing about the multinational corporation, international businesses. Then we have a little discussion about the agency theory type 1, type 2, type 3. Then we discuss a bit about the causes, and then we discuss about the management control theory. In management control theory, what we discuss, the centralized management control theory and decentralized management control theory. Centralized management control theory is basically a control mechanism from the parent company, while in decentralized management control theory, the power, responsibility and authority is wholly and solely shifted to the subsidiary. However, in a nutshell, the centralized management control system is better than decentralized management control system in controlling the agency issues of the multinational company. Sir. Yes. सर मैं पूछा था सेंट्रलाइज में भी तो इशू हो सकते हैं, क्योंकि इसमें भी तो जो टाइप 2 और टाइप 3 है, फॉर एग्जांपल डिस्टेंस फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन और साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, मतलब टाइप 2 और टाइप 3 जो है एजेंसी थ्योरी में प्रॉब्लम्स है वो भी तो अगर हो सकती है ना, फिर हम उसमें क्यों कह रहे हैं कि उसमें कम चांसेस हैं? ये बेसिकली अकॉर्डिंग टू द लिटरेचर,
according to the research, according to the systematic literature review, after taking the data through qualitative and quantitative way, the significance of this theory have been shown, and the authors or the researcher claims that centralized system is better than decentralized system because because they have proved all these theory through data. Okay, sir. प्रॉब्लम आ सकते हैं, नो डाउट बहुत से प्रॉब्लम हो सकते हैं, लेकिन when they did the comparative analysis, when they did comparative study, when they had the questionnaire in their hand, when they had the observation in their hand, when they gathered data through interviews from the multinationals employees, then what happens that people with lot of burnout were not happy from a decentralized system rather from a centralized system. तो जब उन्होंने क्या किया, they gather the data on international level from the employee of the subsidiary. So the employee of the subsidiary preferred the centralized system. और ये generally अगर आपसे मैं अभी पूछूं कि आपका एक बॉस जो है वो अंग्रेज हो और एक पाकिस्तानी हो, तो ऑब्वियसली उनकी एटीट्यूड में बहुत डिफरेंस होगा. इज इट? यस सर. तो मतलब जो एक नेचुरली अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि वेदर यू विल प्रीफर पाकिस्तानी बॉस और जब उसे आप जानते ना हो और यूएस नेशनल बॉस, ऑब्वियसली मैं अपनी पर्सनली ये मैं यूएस को टिक करूंगा बिकॉज उससे मैं लर्न करूंगा, उसकी एजुकेशन डिफरेंट होगी, उसका एक्सपीरियंस डिफरेंट होगा, उसका एटीट्यूड डिफरेंट होगा, उसका लर्निंग और जो जो मिक्सिंग इन्वायरमेंट है वो डिफरेंट होगा. सो आई विल ऑप्ट फॉर दैट. दिस इज आई एम पर्सनली, इफ यू गिव मी अ क्वेश्चन हियर, आई विल ऑप्ट फॉर दैट. दैट इज व्हाई ये भी हो सकता है कि बहुत से ऑर्गेनाइजेशन जो मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वो अपना ही क्या कहते हैं बॉस इधर ले आते हैं, फिर उसको वो डिसेंट्रलाइज कर देते हैं. जो मसला आता है वो बेसिकली कल्चर की वजह से आता है, नेशनलिटी की वजह से आता है, लैंग्वेज की वजह से आता है, उसके बेस पे फिर बाइसनेस क्रिएट हो जाती. बल्कि मैं आपको एक और मिसाल दूं, मेरे कुछ दोस्त ये मशरक बैंक के जब हमने मास्टर्स किया तो 57 हमारे बैच के लोग दुबई में मशरक बैंक में चले गए. उसमें से 30 के लगभग लोग अभी तक वो सीनियर पोजीशंस पे हैं, दुबई में बैठे हुए हैं. उनसे जब मैं डिस्कस करते हैं कि हमारे जो इंडियन बॉस आते हैं दे आर वेरी डिफरेंट, दे आर वेरी हार्श, दे हैव अ बायसनेस विद अस एंड सो ऑन. लेकिन इसके अगेंस्ट अगर हमारा कोई दूसरे नेशनलिटी का बंदा आता है या कोई अंग्रेज आता है, सो ही इज डिफरेंट. तो वो जो कल्चर होता है, वो जो लैंग्वेजेस होती है, वो बॉर्डर्स होती है, वो कम्युनिकेशंस होती है, उसके बेस पे भी ये इस पे बहुत बड़ी बड़ी रिसर्च हुई है. बल्कि आपको अगर ऑफिस में कोई अपना बॉस पसंद नहीं है, यू कैन नॉट गो, यू कैन नॉट फील गुड एट एवरी डे. ठीक है, उसके डिसीजन आप मानेंगे तो सही, लेकिन क्या होगा कि यू विल नॉट क्या कहते हैं एक्सेप्ट इट विद अ होल हार्ट. सही है? यस सर. ठीक है, दैट इज वाई क्या होगा अब, व्हाट बेसिकली दिस मींस कि जो मैनेजमेंट कंट्रोल थ्योरी है वो बेसिकली क्या करती है, वो बेसिकली दो चीजों पे काम करती है. either they will allow their subsidiary manager to take or to make any decision, or they will take decision from the parent company. Clear? यस सर. Yes. Thank you. उसके बाद है मल्टीनेशनल फर्म्स के लिए हैं theories of constraints. ठीक है, theories of constraint. Give me a second, I am coming in a while. Give me a second please.
Assalamu alaikum. वालेकुम सलाम सर। Okay, thank you. So I was discussing. Yeah, I'm discussing about the theory of constraint. Okay, theory of constraint. The first theory is in environmental constraint. You're listening me? Yes sir। Yes, sir. Okay. So the first theory is about the environmental constraint.
Hello. The second one is about the regulatory constraint. And the third one is ethical constraint. Excuse me, sir. Yeah. Sir, first one कौन सा था? Environmental constraints. Oh, thank you. Okay. So these are the three constraints, like the environmental constraint, regulatory constraint, and ethical constraint. Okay. So all these three constraints are directly contributing to the maximization of the shareholder wealth. In environmental constraint, uh, you can say that sometime if you are going abroad for a business, there may be some environmental constraint. Environmental constraint may be in the shape of the local goods and services. Environmental constraint may be in the shape of local communication. Environmental constraint may be in the shape of overall border situation. Environmental constraint may be in the shape of the religion-based activities, and so on. So how you will tackle all these things? There is a theory that is called theory of constraint. Like for example, there is ESG. Okay, ESG. I'm audible? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Wait a bit. So why it is on a speaker? Hello. Yes, sir. Okay. Okay. No, it's got okay. So do you know about the ESG? No, sir. नो इसलिए क्योंकि लास्ट टाइम मैंने एक आपको वीडियो भेजी थी ESG का. ESG इज बेसिकली इन्वायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस. ठीक है, इन्वायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस data which will tell you about the environmental constraint of any country. ठीक है, ESG की एब्रिविएशन लिखें. E environmental, S social, G is governance. Environmental, social and governance. So the data of every country has been developed in the shape of ESG. E environmental, S social and G governance. And whenever any multinational companies will go for an international business, what they will do, they have to look the ESG data of the country. Yani they have to look for the environmental data, social data and governance data, because they will get a lot of information from here that whether people are aware about the environment, about the social issues and about the governance issues as well. Clear hai? Yes, sir. Okay. Yes, sir. So we are discussing the constraints,
theory of constraint. The first theory is theory of environment. और theory of environment में क्या है? We discuss about the ESG, environmental, social and governance. So this is a constraint, and being an executive you have to solve this constraint through environmental, social and governance data. उसके बाद आता है regulatory constraint. Obviously regulatory constraint is an external factor that can affect the maximization of a shareholder wealth. So regulatory constraint basically means from the government, different policies of the government which you have to follow. Like for example, if there is amendment in the tax, so what will be happen? These will be automatically applicable to you. For example, if the sales tax is 3% when you are coming to the country, or the production tax is, for example, 2%, then however, if it get changed, like it will go to 10% or 15%, what will be happen? It will be directly implemented on you. So whenever you will move to any country or any want to move your subsidiary to any other country, you have to look for the environmental as well as regulatory constraint as well. Clear हो गया? Yes, sir. And third one Yes, is sir. yes, third one is ethical constraint. Very much important. Okay, like for example, every country has their ethics. Like being a Muslim country, you cannot advertise the wine advertisement over here. So what you will do, you cannot advertise the wine in Pakistan or in any other Muslim country. Why? Because of the ethics, because of the religion, because of the forbidden. So what happens that whenever, if you are a US parent company and you want to go to other country, you have to look for the ethical constraints as well. और simple इसकी ethical constraint की मिसाल है, you cannot see the advertisement in a local news channels of such a things which is forbidden in the country. That is why these are the constraint. And you know कि we discuss about the constraint. So what happens? The first constraint is environmental, second one is regulatory, and third one is ethical constraint. तो अगर मैं आपसे पूछूं कि how you will show this in a econometric model, तो कैसे आप इसको शो करेंगे econometric model में? सर वाई जो है वो बेसिकली फर्म परफॉर्मेंस बन जाएगी, और जो क्या कहते हैं ये जो वेरिएबल्स हैं इंडिपेंडेंट, उसमें एनवायरनमेंट, Yes. रेगुलेटरी और एथिकल ये बन जाएंगे फैक्टर्स. वेरी गुड. और ये जितने भी थ्योरीज डेवलप हुए हैं वो बेसिकली उसको सिग्निफिकेंस देखने के लिए यू हैव टू डेवलप दिस इकोनोमेट्रिक फ्रेमवर्क. लाइक व्हाई इज योर सब्सिडरी परफॉर्मेंस. ठीक है, यानी जो आपकी सब्सिडरी है, A is constant, B1 X1 is your environmental constraint, that is ESG. Then B2 regulatory constraint, that is from the government, and third is ethical constraint, that is basically because of the can be because of the religion, can be because of the culture, can be because of the customs. Clear? जी सर. ठीक है. उसके बाद है आपके इंटरनेशनल बिजनेस एंड फाइनेंस के जो आपके हैं कि व्हाट आर द डिफरेंट थ्योरीज, ठीक है, that should be specifically used
for the efficiency of the international business. So the first theory is theory of comparative advantage. ठीक है, लिख लें theory of comparative advantage. The second one is imperfect market theory. The third one is product cycle theory. Okay, so these are the three theories. The first theory is theory of comparative advantage. Obviously, this is a theory of the multinational company for the business. So what does this theory means? The theory of compare. Yes. सर ये थर्ड वन क्या थी सर? Third one is product cycle theory. Product life cycle theory नहीं है? ओके सर. Okay. So the first theory is theory of comparative advantage. ठीक है? What advantage your subsidiary have in comparisons to the other subsidiary or other country subsidiary? Means what type of specialization by countries can increase production efficiency? Like the first theory is that how you will be specialized in production or in service or in finished goods or in material or in work in process. What type of comparative advantage you have that will make you differ than the other one? So the theory of comparative advantage is very much important, because the country where you are going, either you have a comparative advantage of this business over there or not. So this is a very simple and a clear-cut theory that is called theory of comparative advantage. And based on this theory, your specialization by countries can increase production efficiency. और इसके लिए बहुत ज्यादा रिसर्च हुई है. 2 countries के दरमियान भी रिसर्च हुई है, 2 continents के दरमियान भी रिसर्च हुई है, 2 different markets के दरमियान भी रिसर्च हुई है, डेवलपिंग, अंडर डेवलपिंग के कंपैरेटिव एडवांटेज के बेस पे रिसर्च हुई है. और उस रिसर्च के बाद व्हाट दे केम टू नो that if you have a specialization by country, then you can increase the production efficiency, and with this production efficiency, as this is your specialization, you can maximize the shareholder wealth. ठीक है. उसके बाद है imperfect market theory. Imperfect market theory basically means the markets for the various resources used in production are imperfect. So what you have to do, you have to move in such a type of market where you can explore the gap, where you can have a niche market, where your product can be a market leader, where the other companies cannot challenge you, where the market is not in a perfect competition. So you have to behave in a one-man show. You have to, your product or your production or your services or your merchandise will perform as a product of an imperfect market. The third one is, सर दोबारा एक्सप्लेन कर दीजिएगा imperfect market theory. the markets for the various resources used in production are imperfect. Like for example, resources क्या है? Land, labor, capital और entrepreneurs हैं. ठीक है, जो आपके different 4 वो आपके हैं
Yeah, what basically this means ke there is a when there is a perfect competition, it means ke same commodity होती है, same price होती है, same customer होते हैं, ठीक है, same market होती है, and so on. But in a imperfect market competition, you can be in a one-man show, or your challengers are very less. You are the market leader. So if your product are selling in an imperfect market, it means that your competitor are very less, or there is no competitor. That is why they're saying that if you are going for an international business, what you have to do, you have to do a search for their local industry, that what type of gap I can find out whether the product I am selling is already in the perfect market over there, or I can explore an imperfect market at that country in order to sell my product in a different way than in a perfect market. ठीक है? Yes, sir. यानी अब ये है कि अगर फॉर एग्जांपल आप क्या कहते हैं, किसी ऐसी कंट्री में ऐसी चीज शुरू कर दे जो ऑलरेडी वहां बहुत हो रही हो, so this will be very difficult for you to excel. That is why you should come up with a different product. उसके बाद जो है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इंसान के लिए भी इंपॉर्टेंट है, प्रोडक्ट के लिए भी इंपॉर्टेंट है, कंपनी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, वो प्रोडक्ट साइकिल थ्योरी है. Product cycle theory kya hai? Obviously, we know about product life cycle theory. The first one is an introduction, then growth, then maturity, then becomes the market star. Then from there there is a downfall, and then at the end it got dead as well. So what they are saying, that product life cycle theory is a firm matures, it may recognize additional opportunity outside its home country. Okay, like for example, they are saying that if your product is matured, or if your product is a market leader, or if it is in maturity stage, what you will do, you have to think for other country, because the business you are doing in the same country, the product you wish is in mature stage and it is selling like a hot cake. So product cycle theory says that when your product reach to the maturity country, in the maturity stage in the concerned country, then you have to move to the other country, because you have matured your product in the parents country. ठीक है, तो उस सेंस में वो क्या कहते हैं, दे आर सेइंग दैट मूव टू द अदर कंट्री.
Hello. Yes, sir. Yes, sir. I think I muted and I talked a lot, but you did not listen. Yes, sir. तोबा तोबा, ऐसे बोल रहा हूँ इतना. Okay. थोड़ा रेस्ट So कर ले सर. तो कर लेते हैं रेस्ट, लेकिन थोड़ा सा 1 सेकंड. What we discussed today, we discuss about the international market, ठीक है. Then we discuss about the MNCs. Then we discuss about the agency theories a bit, and type 1, type 2 and type 3 theory. Then reasons for the conflict, ठीक है. उसके बाद we discuss about the theories of management control, that is centralized theory and decentralized theory. Then we studied about the about the constraint theory, that is about the environmental constraint, regulatory constraint and ethical constraint. Then we discuss about the international business and finance theories. The first theory is theory of comparative advantage. The second one is imperfect market theory, and the third one is product cycle theory. So this was our discussion up till now. So do you have any question? एक्सक्यूज मी जी जी. सर, ये हमने लेट ज्वाइन किया था, तो सर ये इंटरनेशनल जो मार्केट थ्योरी आपने सर शुरू में पढ़ाई थी, वो हमने नहीं सुनी, तो वो थोड़ी सी डिस्कस कर दें. इंटरनेशनल मार्केट थ्योरी कौन सी वाली? सर फर्स्ट जो आप कह रहे थे अभी आपने पढ़ाई है सर शुरू में. ये सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज से पहले. उससे पहले तो वी डिस्कस अबाउट द एजेंसी थ्योरी, जो ऑलरेडी वी हैड. सर जो आपने सबसे फर्स्ट में करवाई है, वो हम उस टाइम ज्वाइन नहीं किया हुआ था. फर्स्ट में तो जनरली वी डिस्कस अबाउट द मल्टीनेशनल कंपनी क्या होती है, इंटरनेशनल इन्वायरमेंट क्या होता है, और उसके बाद जो मल्टीनेशनल कंपनीज में आपकी मार्केट्स होते हैं, यानी आपकी एक्सपोर्टिंग और इंपोर्टिंग मार्केट है जो कि प्रोडक्ट मार्केट कहलाती है. उसके बाद आपकी जो मार्केट है डिविडेंड एंड रेमिटेंस एंड फाइनेंसिंग मार्केट है, यानी जहां आपकी सब्सिडरीज होगी. और उसके बाद इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसिंग मार्केट है जो कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट से बैंक्स होती है, या आपके अदर सब्सिडरीज भी हो सकती है. सो व्हाट बेसिक this means that we are talking about the environment, we are talking about the international environment, and then in the international environment we are talking about the international financial environment. और फिर इंटरनेशनल फाइनेंशियल इन्वायरमेंट में वी आर टॉकिंग अबाउट द मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन. और उसके बाद व्हाट वी आर टॉकिंग दैट व्हाट द फॉरेन एक्सचेंज विल give you in reply if you are doing business internationally. उसके बाद 3 किस्म की मार्केट है. प्रोडक्ट मार्केट है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए हैं. सब्सिडरीज आपकी डिविडेंड, रेमिटेंस और फाइनेंसिंग के लिए काम करती है. और आपकी जो इन्वेस्टमेंट और फाइनेंसिंग है, either you will do that in the international financial market or you will do it in the local market. फिर उसके बाद हमने एक जनरल डिस्कशन की कि जो मल्टीनेशनल कंपनी का गोल है, दैट इज मैक्सिमाइजेशन ऑफ द शेयर होल्डर वेल्थ होता है. अब वो जो शेयर होल्डर वेल्थ के मैक्सिमाइजेशन में क्या क्या काम आपने करने ताकि वो मैक्सिमाइज हो जाए, तो उसको इफेक्ट करने के लिए एजेंसी प्रॉब्लम होता है. एजेंसी प्रॉब्लम या एजेंसी थ्योरी को डिवाइड किया है 3 हिस्सों में, प्रिंसिपल टू एजेंट, प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल और एजेंट टू एजेंट. वजह क्या है उसकी हमने वजह बताई है कि कल्चर एक वजह हो सकती है जिसकी वजह से एजेंसी प्रॉब्लम आ सकते हैं. उसके बाद साइज एक वजह हो सकती है जिसकी वजह से एजेंसी प्रॉब्लम आ सकती है. उसकी वजह, इसके अलावा जो आपके डिस्टेंस होता है सब्सिडरीज का फ्रॉम द पेरेंट कंपनी, उसकी वजह से भी
प्रॉब्लम आ सकते हैं। उसके बाद हमने मैनेजमेंट कंट्रोल थ्योरीज को डिफाइन किया है। वो थ्योरी बेसिकली डिवाइडेड इनटू टू, सेंट्रलाइज्ड एंड डिसेंट्रलाइज्ड। सेंट्रलाइज्ड थ्योरी में क्या होता है कि ऑल दी अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, और अकाउंटेबिलिटी दैट रिमेन्स विद द पेरेंट कंपनी, ठीक है। और डिसेंट्रलाइज में क्या होता है, इसके वाइस वर्स होता है, यानी ऑल दी अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी आर शिफ्टेड टू दी सब्सिडरी मैनेजर्स, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, एजेंसी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आ जाता है। उसके बाद वी डिस्कस अबाउट दी कंस्ट्रेंट्स थ्योरी के कौन कौन सी थ्योरी है, थ्योरीज ऑफ कंस्ट्रेंट, जिसमें इन्वायरमेंटल कंस्ट्रेंट, रेगुलेटरी कंस्ट्रेंट्स और एथिकल कंस्ट्रेंट है। और इन्वायरमेंटल कंस्ट्रेंट में वी डिस्कस अबाउट द ESG, इन्वायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस, यानी all the जो parent company है, when they will move to any other subsidiary company, what they will do, they will have to look for all these three variables: environmental, regulatory and ethical, yani X1, X2, X3, because all these three variable will directly contribute to what, to the efficiency of the firm. उसके बाद we discuss about the इंटरनेशनल बिजनेस एंड फाइनेंस थ्योरीज, जिसमें सबसे पहले थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज है, उसके बाद इम्परफेक्ट मार्केट थ्योरी है, और उसके बाद प्रोडक्ट साइकिल थ्योरी है। सो दीज थ्री थ्योरी बाय जो कंपैरेटिव एडवांटेज है, दैट इज बेस्ड ऑन द स्पेशलाइजेशन। if you have a specialization in any product or in any service, then you can move your business from the parent company to the subsidiary country as well. Uske baad imperfect market is another theory that tells you that you can move your business to other country if the market is imperfect over there, if you can excel over there, if your product is different in a different way where you can excel yourself. उसके बाद प्रोडक्ट साइकिल थ्योरी है कि अगर आपके जो प्रोडक्ट है वो आपके कंट्री में क्या है, योर कंट्री, आपके अपने कंट्री में वो मैच्योर हो चुका हो, तो आप उसको किसी दूसरे कंट्री में लेके जा सकते हैं एज अ सब्सिडरी कंपनी, ठीक है। यस सर। उसके बाद जो है हमारे जो नया है टॉपिक है, दैट इज कॉल्ड वैल्यूएशन थ्योरीज, कि कौन कौन सी थ्योरी है जो कि थ्योरीज ऑफ वैल्यूएशन, आप लिख लें कि वैल्यूएट कैसे करेंगे, यानी हाउ दी वैल्यू कैन बी मैनेज, हाउ यू विल मैनेज दी वैल्यू ऑफ अ सब्सिडरी। क्योंकि देखिए हमने अभी डिस्कशन की है कि आप अपने पेरेंट कंपनी को सब्सिडरी में ले आए, अब हाउ दी सब्सिडरी कैन बी रन, how you will maximize the value, ये जो बातें हमने की है, no doubt these are very much important, but there are some formulas, there are some myths, there are some realities, there are some theories that will actually give you the results of the firms, of the companies on the local base as well as on the international base. So we call it valuation theories, theories of valuations. Theories of valuation में क्या होता है, basically any investor क्या कहते हैं, जो philosophically base पे सोचता है कि any investor believe that there will be a positive return, ठीक है, of his investment based on financial fundamentals, like if you are going to invest anywhere, okay, so automatically, or you can say if we call it as a rules of thumb, you will think for the positive return. However, the results can be negative as well. Why? Because of the financial market. Why? Because of the financial fundamentals. Why?
Because of the country environment. Why? Because of the political, social, environmental, law and order situations. Why? Because of the COVID-19. So if we talk about the investment that has been done in 2019, no one knows about the COVID-19 2020. That has just ruined the businesses, that has just ruined every theory, that has just ruined every model and everything. Like you cannot run any type of theory, you cannot run any type of model on the COVID-19 because this has affected each and every businesses. However, in order to play safe, all the theories is contributing in some or other way to the profit maximization. Okay? No, there is some misconception about the valuation. The first one is a valuation is an objective search for true value. This is a myth. ठीक है? यानी हर कोई कहता है कि you will get a true value, but you cannot get a true value. It's a myth. Like if you are investing something and you are expecting that I will get 50 rupees, so this is a myth. It means you will get 50 rupees as a profit. This is a myth. It is not a true value. You can get 50, you can get 40, you can get 30, you can get nothing, you can get 60. So this is a myth that is considered as a misconception about the valuation. Another myth that is a good valuation provides a precise estimate of value. This is also a myth. They're saying a good valuation model provides a precise estimates of value. This is a myth because COVID-19 proved it wrong. Because earthquake can prove it wrong. Because flood can prove it wrong. Because war can prove it wrong. And so many other things as well. The third myth about the misconception of valuation, the more quantitative a model, the better the valuation. This is also a myth. आप जितना भी quantitatively or qualitatively किसी मॉडल को डेवलप कर ले, they cannot give a pure solution. A quantitative model क्या होता है जिसमें आप एक ऐसा मॉडल डेवलप करें कि उसमें आप इन्फ्लेशन को भी एडजस्ट कर लें, उसमें आप पॉवर्टी को भी एडजस्ट कर लें, उसमें आप एक्सचेंज रेट को भी एडजस्ट कर लें, उसमें आप प्रीवियस डेटा ले लें, वो भी बड़ा पॉजिटिव है. लेकिन you never know that a quantitative model can give you 110% accurate result. So all these are myths. However, there are some formulas, and those formulas is based on the quantitative models that can help in some or other way. It's not a 100% correct way. Your valuation cannot be 100% correct, but in some or other ways it can help you. अब कौन से ways है? So there are 3 ways. आप इसको लिख लें. Approaches to valuation. There are 3 approaches. The first approach, I'm audible to everyone? Sir. Yes, sir. Okay. यानी वैल्यूएशन की जो थ्योरीज है उसके बारे में मिथ यही है कि they are not 100% correct. There is a variation. There is a standard deviation. They are away from the mean. But you have to consider it because in some or other way it can estimate sometime. So there are 3 estimation approaches to valuation. The first one is discounted cash flow valuation. Discounted cash flow valuation. The second one is relative valuation. Relative valuation. And the third one is contingent
क्लेम वैल्यूएशन, ठीक है, यानी जो वैल्यूएशन की जो थ्योरीज है, that is once again divided into three: discounted cash flow valuation, relative valuation and contingent claim valuation, ठीक है। अब what is discounted cash flow valuation, ठीक है, discounted cash flow valuation relates to the value of an asset to the present value of expected future cash flow on that asset, like time value of money, what you will invest today and how much you will get, or what will be your future expectation as a cash flow. So this is only a valuation model. Like in time value of money, the book of Venhorn, chapter number 3, you can only do the estimation. That is why they're saying that valuation models are the myths. Valuation model cannot give you 100% result. Valuation model can be vary from time to time. So the first valuation model is discounted cash flow valuation, where you can only expect a future cash flow if you invest in present value. The second one is relative valuation. समझ आ रही है ना please? Yes, sir. Okay, second one is relative valuation. A relative valuation estimates the value of an asset by looking at the pricing of comparable assets relative to a common variable like earning, cash flows, book value or sales. It's very simple. ठीक है, how you do valuation, ठीक है, जब आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, वैल्यूएट कैसे करते हैं किसी भी कंपनी को? बेस्ड ऑन देयर अर्निंग्स, based on their cash flows, based on their book values, based on their sales. So this is a general valuation method. If you are going for a relative valuation method, a relative valuation approach of a company for an investments, what you will do, you have to go and you have to look their earnings. Earning means their return on assets, return on equity, earning per share. You have to look their cash flows, how much inflows and how much outflows are there. You have to look for their sales or their revenues. So based on these earnings, cash flows, book values and sales, you can have a relative valuation of a company for investments. Clear? Yes, sir. Sir. Okay. यानी फर्स्ट वन क्या होगा? डिस्काउंटेड कैश फ्लो वैल्यूएशन मॉडल हो गया, सेकंड हो गया रिलेटिव वैल्यूएशन मॉडल हो गया, थर्ड कंटीजेंट क्लेम वैल्यूएशन मॉडल. Contingent claim valuation model uses option pricing model to measure the value of assets that share option characteristics. Obviously, option, call option or put option. You have to, for example, you have the data of 100 companies, and you just you have the data of 100 companies for what? For the option pricing. And based on this data, what you do, you look at the call options and put option exercises, and on the basis of this call option and put option, what you can do, you can invest over there, because you have the right in an option. जब options pricing theory आप पढ़ी है, तो उसमें you have the right to sell or buy. Okay, you have the right to sell or buy. So it means कि अगर आप किसी भी कंपनी का को वैल्यूएट करना चाहते हैं, you can use the options pricing models to measure the value of assets that share option characteristics. So option characteristics क्या है कि अगर आपका spot price आपके exercise price से
कम हो देन व्हाट विल बी हैपन, और अगर आपका एक्सरसाइज प्राइस स्पॉट प्राइस से कम है देन व्हाट विल बी हैपन. सो ऑल दीज गेट टुगेदर विल जनरेट द वैल्यूएशन अप्रोच. यानी इसका मतलब क्या है कि व्हेन you are going for the valuation theory or theory of valuation, you have to keep these three approaches in your mind. The first approach is discounted cash flow valuation approach. Second one is relative valuation approach. The third one is contingent claim valuation approach. पहले अप्रोच में टाइम वैल्यू ऑफ मनी यूज होता है. दूसरे अप्रोच जो रिलेटिव वाला है उसमें आप अर्निंग, कैश फ्लोज, सेल्स और बुक वैल्यूज को देखते हैं. थर्ड में आप क्या कहते हैं, यू हैव टू लुक फॉर द ऑप्शन प्राइसिंग. अब इन सारे अप्रोचेस के फार्मूलाज है, यानी we discuss these approaches like we discuss the discounted cash flow approach, we discuss the relative valuation models, we discuss the contingent claim valuation models. So we just only discuss it theoretically. You all have, and you can see, I will show you the formulas, the models, the data based on which you can significantly check or you can significantly prove these valuation approaches. ठीक है, समझ आ रही है ना बात? ये जो हम बातें कर रहे हैं ना, डिस्काउंटेड कैश फ्लो की, रिलेटिव वैल्यूएशन की, कंटीजेंट, इन सब को प्रूव करने के लिए एज अ रिसर्चर, चूंकि आप एमएस कर रहे हैं, आप लोगों को पास डेटा होगा. उस डेटा के बेस पे आप इस थ्योरी को वैल्यूएट करेंगे. उस वैल्यूएशन के बेस पे यू कैन डिफाइन और यू कैन डिजाइन योर ओन, क्या कहते हैं, योर ओन ओपिनियन वेदर टू गो फॉर इन्वेस्टमेंट और नॉट. अब आप पे डिपेंड करता है कि आप किस मार्केट में हैं, किस कंट्री में हैं, किस सेक्टर में हैं, कौन से करेंसी में हैं, कौन से कल्चर में हैं, कौन से रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में हैं, किस कंपनी के अर्निंग्स आप देख रहे हैं, किस कंपनी के कैश फ्लोज आप देख रहे हैं, किस कंपनी के टाइम वैल्यू ऑफ मनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, किस कंपनी के ऑप्शन प्राइसिंग देख रहे हैं. दिस विल बी अ मिक्सचर. और वो मिक्सचर आप किस चीज से करेंगे, इसको सेपरेट करेंगे. यू विल सेपरेट इट बेस्ड ऑन दी डिफरेंट मॉडल्स, डिफरेंट फार्मूलाज. और वो फार्मूला हम एक ब्रेक के बाद पढ़ेंगे. जब ब्रेक के बाद हम आएंगे, सो वी विल स्टडी दोज फार्मूलाज. क्लियर? अभी एक ब्रेक ले लें 15 to 20 मिनट्स का. उसके बाद हम ये जितना भी पढ़ा है उसके वो फार्मूला पढ़ेंगे. सही है? ओके सर. क्लियर? अच्छा सर, बात पूछनी थी आपसे सर. यस जी सर. जी. अच्छा सर, वो जो आपने हमको दिया था वो स्टाडा का, सर वो तो वीडियो को इतनी मतलब मैक्सिमाइज भी नहीं हो रही, तो सर वो नहीं आप कराएंगे हमको? वो मैं कराऊंगा, वो प्रैक्टिकली मैं आपको कराऊंगा. असल में कोविड का मैं वेट कर रहा था कि थोड़ा कोविड कम हो जाए, लेकिन हम ये करेंगे कि आप लोगों को मैंने मेरे ख्याल पहले भी बताया था कि आप लोग मुझे एक रिक्वेस्ट भेजे, ठीक है, कि आपके लिए मैं एक क्लास ऑर्गेनाइज कर सकूं यूनिवर्सिटी में, सिर्फ एक क्लास, ताकि हम उसमें स्टेटा कर लें. क्योंकि स्टेटा का जो मसला है ना, वो एक आपके साथ शेयर हो रहा है स्क्रीन. जब मैं एनालिसिस करता हूं तो वो स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा. तो आप में जितने भी लोग हैं जो विलिंग है, जो कर रहे हैं, अली यू आर लिसनिंग मी? जी सर. अच्छा, आप काइंडली एक ऐसा काम कर दे कि जो जो स्टेटा के लिए विलिंग है प्रैक्टिकल के लिए, वो आप उसका आप एक लिस्ट बना ले, उसका सिग्नेचर ले लें. ठीक है, सिग्नेचर ले लें, वो मुझे सेंड कर दे. फिर हम एक प्राइवेट क्या कर सकते हैं, अगर यूनिवर्सिटी हमें इजाजत नहीं देती, जिस तरह फॉर एग्जांपल एमफिल वाले 15 लोग हैं, उसका मैं प्राइवेट कराने जा रहा हूँ. मतलब किसी जगह बैठ के अपने सारे ये जितने भी कोविड के मेजरमेंट लेके हम कहीं बैठ के लंच भी कर लेंगे,
हल्का पुल्का, और ये पूरे दिन की एक्टिविटी भी कर लेंगे। सो इट्स अप टू यू पीपल कि आप मुझसे कैसे और कब टाइम देते हैं। होगा सैटरडे को, लेकिन उस दिन फिर ये कर लेंगे कि सैटरडे को दोनों क्लासें आपके साथ मैं ले लूंगा, यानी उसको मैं कह दूंगा सर को, अपना क्या नाम है सर का, सतार साहब, सतार से उसको मैं कह दूंगा, सतार साहब को, फिर हम सब मिलके किसी ऐसी जगह, फॉर एग्जांपल ऐसी जगह बैठ जाएंगे जहाँ सबके पास लैपटॉप होंगे। आई विल बी द इंस्ट्रक्टर एंड वी विल डू इट, और उसके साथ साथ हम ये हल्की पुल्की खाने पीने की एक्टिविटी भी कर लेंगे। इसके लिए अली या जिसने मुझसे ये क्वेश्चन किया है, आप दोनों रिस्पॉन्सिबल है। सो मेक इट अ प्लान, टेल मी द प्लान एंड मेक गिव योर कंसेंट, so I will be ready for you। ठीक है, ओके सर। ये सिर्फ ओके सर। सिर्फ स्टेटा नहीं, मैं आप लोगों को डेटा स्ट्रीम भी करवा दूंगा उसी पूरे दिन में इंशाल्लाह, और प्लस आपको एंड नोट और जो आपका है रेफरेंसिंग वाला दूसरा जो है मेंडले, वो भी करवा दूंगा। लेकिन अब इट्स अप टू यू कि आप लोग एक सिग्नेचर डेवलप कर लें जिसपे सबके साइन हो, वो मुझे ईमेल कर दें, मैं आगे फॉरवर्ड कर दूं, मैं सिर्फ इजाजत ले लूं, बाकी हम कहीं बैठ के खुद कर लेंगे जो जो करना चाहते हैं। ठीक है, सो अब बाल आपके कोर्ट में हैं। ठीक हो गया सर। ठीक है अली, अगर आप वन बाय वन अगर आपको ईमेल कर दें, रिक्वेस्ट मेल कर दें कि जी आप हमारी इसके लिए वन बाय वन सर आपको ईमेल फॉरवर्ड करेंगे। अभी डेफिनेटली अली भाई कहाँ रहते हैं, कोई किधर रहता है, तो उसके लिए उसके सिग्नेचर करके नहीं अली नहीं भाई नहीं की नहीं, या आप बात पिक्चर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर होता है ना, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर आप वो अली को भेज देना, अली सबके इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर उधर उधर पुट कर देगा बस। राइट सर। ठीक है, अली को भेज दे सारे। अली जी सर। प्लीज डू दिस, क्योंकि एक हमारी आउटडोर मीटिंग भी हो जाएगी, एक लंच भी कर लेंगे, और प्लस ये काम भी हो जाएगा। ठीक है, ठीक हो गया सर। आप थोड़े से वो लग रहे हैं, सीरियस तो है, नहीं क्लियर, तबीयत ठीक है? ठीक है सर, ठीक है बिल्कुल। ओके ओके ठीक है, ओके अल्लाह हाफिज। फिर बाद में ये मैं आपको वो करवाता हूँ ब्रेक के बाद। ओके सर, ओके।